Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing today's topic, which is the preamble of the Constitution of India. Preamble, right? Now my way of teaching preamble is a little different from what you will normally read. What will happen that you would want me that I should write the I should have put the photo of preamble, but I would like to write it with you. ठीक है, मैं आपके साथ साथ यहाँ preamble लिखूंगा और एक एक वर्ड उठाऊंगा और वो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको समझाने शुरू कर दूंगा. ठीक है, इस साथ साथ समझाता जाऊंगा. तो दैट इज़ हाउ वी विल बी डूइंग दिस. देखिए, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, एंड व्हेन यू रिमेंबर द प्रीएम्बल यू कैन यूज इट एनीवेयर. योर एसे, योर पॉलिटी आंसर, योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर्स, so in governance topics, everywhere you can mention these topics, including even history and geography. Even so, at so many places you can use this preamble. So we will do this very carefully. Okay. So if we talk about preamble, let me just start with the words over here written in the preamble, and which says that it says that we, please you can write with me, you can take down notes parallelly. So it says we the people of India. Now this means that Constitution of India is coming to us through ourselves only. We the people of India. अब इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जब 1950 में, ओनली दोज पीपल नो दिस. वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस वी द पीपल इंक्लूड you and me and every citizen of India. The day we are born in India, it's a legal presumption. ये मान लिया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फेथफुल रहेंगे, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपको मानना पड़ेगा. एंड वाई ओनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ये क्यों नहीं, कोई और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं मान सकते हैं इंडिया में रहते हुए. तो हम लोगों के यहाँ पर रहते हुए हमारे अंदर ये यहाँ पर एक इम्प्लिसिट है कि हम इसको मानेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वी हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व. ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर, इसके अंदर कुछ समझाने को खास नहीं है. सोलेमनली रिजॉल्व्ड. ठीक है, द टू इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या चीज़ के लिए हम ये कस्में वादे जो कर रहे हैं, फॉर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी सोलेमनली फॉर व्हाट आर वी सोलेमनली रिजॉल्विंग दिस. दिस इज टू कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि बनाया जाए किस चीज को, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. देखिए यहां तक भी बात खत्म हो जाती है एक्चुअली में. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू वी वांट टू मेक. हाँ, यहां पर अब बात शुरू होती है जो आप सब जगह पढ़ते रहते हैं बैठ के, जिन वर्ड्स को सभी रट्टा मारते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया, हम कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं. हम ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं जो कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो. ओके, तो एंड ठीक है, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. हम एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं, ये लिखा है प्रीएम्बल के अंदर. अब इन सारे वर्ड्स के मतलब क्या हैं, आई विल क्विकली टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड रिपब्लिक. राइट, व्हाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स रिपब्लिक. लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू शीट ओवर हियर, देयर आई विल शो यू. Okay, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, right? Okay, so why are we calling it republic? Because see, in India the head of state कौन इलेक्ट करता है जी, हम, we the people, right? It is elected, so that is why we are a republic, because it is elected and it is not a hereditary monarch. That is why we are a republic. It is not hereditary monarch. Okay, a lot of people, even the law students, they are confused between these words, we are democratic or we are republic. I'm telling you, so you will know this thing after listening to this lecture. So republic means that there is a head of the state elected by the people. We elected, ठीक है ना, by the people, he is elected. Okay, and elected, I'll write the word here. And he is not a hereditary monarch. Okay, let's move ahead. Democratic. Why are we democratic? We are democratic because जो constitution है, right? It ensures that there is a government at the will of the people. ठीक है, तो government is there, government at will of people. और will of people कैसे होती है,
वोट से जी इलेक्शन होते हैं, थ्रू वोटिंग, विच इट इज आर विल ओनली दैट वी पुट द वोट एंड इलेक्ट द गवर्नमेंट, सो दैट शोज डेमोक्रेटिक, राइट, डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, थ्रू द इट इज थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, every 5 years we know elections are held, and this is based on this voting is based on the principle of universal adult franchise, all adults, universal, yani that means everyone can put the vote, okay. So we move ahead now. I told you it is sovereign, okay. So why it is sovereign, I'll come to these words later. I'll tell you why I'm skipping these words for this moment. I'm coming to the first word, sovereign. And what is the meaning of sovereign here? Because our government can make any decision, right? Government can take any decision without international pressure, right, without any interference by any third country, right. That is why we are sovereign, okay. So now just because we are a membership of a United Nations, it doesn't mean that we don't remain sovereign, or we have a membership of, let's say, Commonwealth. United Nations के कुछ rules हैं, but we of our own agreement, हमने अपनी मर्जी से, to our own decision, we joined United Nations. So we cannot say that they are enforcing it, we accepted them. That is the difference you will have to understand over here, okay. Now these two words, they were added later on by 42nd amendment. 42nd amendment से ये words add हुए थे, और स्वर्ण सिंह कमेटी was there. स्वर्ण सिंह, SWARAN, स्वर्ण सिंह कमेटी, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये दोनों ऐड हुए थे. सोवरन, ठीक है जी. तो क्या कहते हैं, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स, और ये 1976 के अंदर ये काम हुआ था, ओके. अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आई टॉक टू यू अबाउट दीज वर्ड्स, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ओवर हेयर, ओके. Now, when we say the word socialist, this word socialist, it does not mean that we have started the following policy of socialism, जो एक original socialist context होता है. नहीं, ये वो वाला socialism नहीं है. We have our own Indian context of socialism, right? In what context this socialism exists? One is that it tries to bring equality in income, ठीक है जी, equality in income. एंड लेट्स से स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ऐसी चीज़ों के अंदर हम इक्वालिटी लेकर आना चाह रहे हैं. दैट इज व्हाट दिस सोशलिज्म इज अबाउट, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इट कैन एनेबल द कोर्ट्स टू, लेट्स से, टू लीन इन फेवर ऑफ nationalization और लेट्स से स्टेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री. क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड हम कह सकते हैं कि स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट्स बाकी हैं, हाई कोर्ट है, तो वो दे कैन फेवर, थोड़ा सा टिल्टेड होंगी गवर्नमेंट की फेवर में बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. जरूरी नहीं कि ये हमेशा ट्रू हो, लेकिन जैसे जब बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ, उसको दैट वाज लाइक बिफोर दिस अमेंडमेंट. अदरवाइज व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ नेशनलाइजेशन, वी टुडे गवर्नमेंट कम्स एंड नेशनलाइजेस, लेट्स से, ऑल द बैंक्स इन इंडिया. मतलब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सारे बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है और गवर्नमेंट की ओनरशिप हो जाती है, उनकी गवर्नमेंट चलाती है उन बैंक्स को, सारी प्रॉपर्टी उनको ले लेती है, बदले में उनको कॉम्पनसेट ऑफ कोर्स उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है. कितना कंपनसेट, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, राइट. नाउ व्हाट डू यू, दैट इज नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एसेट. तो कोर्ट वुड बी टिल्टेड लिटिल इन दिस फेवर, बट एट द सेम टाइम, you must remember that this concept of socialism in India is a social democracy, right. Or let's say कि now this is closer to the concept of social democracy. This is actually closer to concept of what do we call as social welfare. All these schemes, Narega and all this, right, now though that is a fundamental right, otherwise right to education or a midday meal scheme and all the schemes that do, even Aadhaar, every kind of scheme, that is a social welfare scheme, right. Not Aadhaar is broader perspective, but social welfare, you got my point, right. For example, मातृत्व सहयोग योजना and all those programs, तो वो सारे हमारे social welfare के अंदर इस point के अंदर cover हो जाते हैं, ठीक है. And this or let's say we can, this is more closer to Indian concept of social state है. It's like in the constitution of France and Germany, वहाँ पर ऐसा है concept चल रहा, France and Germany. Social एक
सोशल स्टेट का कंसेप्ट चल रहा है, लोगों के भलाई के लिए, उस कंसेप्ट में वर्ड, नाउ इन दैट सेंस वी आर यूजिंग द वर्ड सोशलिज्म इन इंडिया. एंड फाइनली दिस वर्ड ओवर इज सेकुलरिज्म, राइट? Now, secularism, now it doesn't mean that India was not for having this Indian socialism before this word was not there in Indian Constitution. ये शब्द तो 1976 में ही आया, तो 1976 में ये वर्ड आया. इसका मतलब ये थोड़ी नहीं से पहले हमारी पॉलिसी वेलफेयर की नहीं थी, तब भी थी. By adding these words, we just made the things explicit. In the same way, we were secular even before the word secular was introduced in the preamble. Right now, that is manifested through our fundamental right. For example, 25 article 25 इससे डील करेगा, ठीक है ना, और थोड़े बहुत आर्टिकल 26 है, 27 एंड इवन 28 तक जाएगा ये, जो इसे डील करेंगे सेकुलरिज्म से. So even 29 to that, for that matter, right, that all relates to secularism ultimately. Okay, तो अब क्या कि जो सेकुलरिज्म के अंदर आ रहा है कि देखिए, जब हम कहते हैं कि वी आर अ सेकुलर, वी मीन बेसिकली दैट इंडिया स्टेट, द गवर्नमेंट स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन, राइट? वी डू नॉट फेवर वन रिलीजन एंड वी डू नॉट फेवर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन. फॉर अस एवरीवन इज इक्वल, वी गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. अब जैसे एक कोई केस हुआ था, यू डोंट हैव टू नो द नेम ऑफ द केस, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. दैट वाज अ केस कि जी जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खुली वो गलत है जी, क्योंकि उससे दे आर सपोर्टिंग सिखिज्म. बट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट ओपनिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जहां पर गुरु नानक देव जी के बारे में टीचिंग्स होती हैं, ही इज द सन, ग्रेट सन ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के महान सपूत हैं वो. तो जो उनकी टीचिंग सिखा रहे हैं, दैट इज फॉर एवरीवन, दैट इज नॉट जस्ट फॉर सेक्स. सेम वे एनी रिलीजन, इस्लाम ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, एनी रिलीजन, ठीक है ना, एनी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, वॉट एवर, all those teachings for everyone. For अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉर्ड महावीर की बर्थ एनिवर्सरी पे कुछ बुक्स पब्लिश करती है, डज नॉट मेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट सेकुलर. वी स्टिल रिमेन सेकुलर. दोज आर ग्रेट आइडियाज विच वी ऑल कैन टॉक अबाउट. वी मस्ट हैव रिलीजियस टॉलरेंस, राइट? इफ वी लर्न अबाउट अदर्स ओनली देन वी वुड बी बेटर एबल टू अप्रिशिएट अदर्स. हमें सबके बारे में अगर पता होगा तब बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे. So that thing is there. And see, if there is a teaching of Sanskrit in school, that doesn't make our schools us unsecular. Even government of Supreme Court held that thing. There was a case actually, but obviously it's not that every school in India should be teaching Sanskrit. That is not the point, right? Or when there was a case of acquisition of the land of mosques by the government of India for some developmental purpose, Supreme Court ने उस टाइम कहा कि that it is perfectly valid case, it is okay, it is not against the spirit of secularism. कहने का मतलब क्या है? The idea that I want to convey to you is that do not be religiously blind. ठीक है जी, पागल मत हो जाइए रिलीजन के पीछे. Understand one thing, that we are secular. Secularism is respect for all, and secularism in India also includes atheism. मैं मानता ही नहीं जी भगवान है, जाइए कर लो जो मर्जी कर लो. There are many religions जो गॉड के कंसेप्ट में मानते, बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना. और लेट्स से आई डू नॉट इवन एग्री दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज एनीथिंग इन इंडिया. आई एम ए पेंथीस्ट, जिनको कहते हैं मैं सारी यूनिवर्स को गॉड सब कुछ मानता हूं. आई डू नॉट एग्री टू कंसेप्ट ऑफ गॉड. इवन देन गवर्नमेंट शुड गिव मी प्रोटेक्शन. देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन, हिज नेम इज डभोलकर. ही वाज लास्ट ईयर और probably in 2013, I don't remember the year, he was murdered for his views. That is some Hindus, probably some Hindu organization, it is claimed that was against it. See, he was murdered. He himself was a Hindu, but he said that I am against your concept of loudspeakers. He would oppose everyone, Muslims or Sikhs or Hindus, everyone. He opposed all religions, saying that आपने जो अपनी मॉस्क के ऊपर या अपने मंदिर या अपने गुरुद्वारा या चर्च कहीं पर भी if you are putting a speaker, it is against my other fundamental rights. And because he raised voice against such things, and then against all the superstitions, ये तांत्रिक वगैरह, all that stuff, right? Now विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हो सकता है कैसे भी सोच रहे हो, ठीक है, दिस इज लेकिन व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. अगर आप तांत्रिक में मानते हैं, वी रिस्पेक्ट यू. इफ यू डोंट गिव डैम अबाउट इट, वी स्टिल रिस्पेक्ट यू. दैट इज द पोजीशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. आप जिसको मर्जी, आप पत्थर को भगवान मानिए, आप गधे को भगवान मानिए, और आप वट एवर यू वांट टू कंसिडर भगवान,
बिकॉज गॉड इज लाइक एवरीवेयर, ठीक है, एक ट्रांसेंडेंटल है, वो हर सब जगह है. तो दैट इज द कंसेप्ट ओवर हियर. खैर, that's a very long topic. I can talk to you very long on that, so I should rather move ahead. Okay, so coming back to the topic. So I was telling you about sovereign socialist secular democratic republic. These words were added. अब ये हम क्यों बनाना चाह रहे हैं? Why do we want we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic? लेकिन why do we want India to be this kind of country, and what we want to do, that is, I'll answer that question. And to secure to its citizens, secure to all its citizens. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हर एक के लिए, आपके विश्वास जैसे मर्जी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट. यू वॉन्ट टू वर्शिप अ ट्री, प्लीज वर्शिप इट. यू वॉन्ट टू वर्शिप अ बॉटल, यू वॉन्ट टू वर्शिप अ बुक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स यू. सिंपल, राइट? नाउ, and this constitution also seeks to secure for all of you. What does it seek? Right, I'll tell you. This is very interesting. It seeks justice, liberty, you can guess it ahead. Justice, liberty, equality. You have to remember preamble by heart, right? If you want to score well in your paper, this is must remember. This is just a very good compilation of words that you must know. And then there is justice, liberty, equality. Okay, so what kind of justice that we will talk about? The justice is social, economic and political justice. हाउ डू वी डू सोशल जस्टिस इन इंडिया? मैं आपको सोशल कैसे होता है? अरे भाई, जब मैं आपको रिजर्वेशन का कंसेप्ट देता हूं, जब मैं कोई भी शेड्यूल कास्ट वाले जो एक्ट्स लेकर आता हूं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, अदर बैकवर्ड क्लास के प्रोविजन लेकर आता हूं, ऑल दैट इज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ओनली. मैं आपको जस्टिस दे रहा हूं ऐसा करके. Many people, many general category people feel that this is a wrong thing happening to them. To my understanding, and I have read law in a great detail, I can tell you it is not injustice to my mind, to my understanding, because that the concept is that अगर कोई equally placed नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, and this is the plain ground, right? This is the ground level. आप यहाँ पर हैं and कोई यहाँ पर बैठा है. आप भी you are here and somebody is here, and this is the ground level, and you want to give a paper, and you want to write a paper. Here you are privileged sitting in your AC rooms and studying and what not, right? And here is somebody is backward and he is to compete with you. That is why he has been given this support. Yes, you are right. There is lot of misuse of this reservation. Lot of people do not deserve this reservation. Lot of scheduled caste, scheduled tribes, and lot of OBC candidates do not deserve this reservation. They are also getting it. So the concept in itself, I repeat, when we say social justice, the concept of reservation in India is good, but misused, highly misused, right? Because the people who do not need this reservation, they are taking this reservation. So that is the point. The people within scheduled caste, आपको जागना चाहिए. You need to be awake if you are a scheduled caste or OBC category person, that how people are misusing what you should have got. If you are a person from backward category, you need to understand this thing. Somebody is exploiting you again. Please fight against it. Stand for your rights. Some other people who are also scheduled caste, but they have not been uplifted. जो मैं आपको ये दिखा रहा था यहाँ पे कि this thing I was showing you कि ये inequality है, यहाँ पर है. अब this person, ये लोग यहाँ पर भी पहुँच गए, तो equality पर आ गए हैं. But some of us, some people are still here only. They also have to be brought up. That is the point. And when I say this is in the social and educational backward. Anyway, we'll dwell upon it later on. So we have economic justice. We give you employment, NREGA, all those economic opportunities, and then we have political justice, in which I give you the voting rights and all those things, right? So जो आपका सोशल जस्टिस हो रहा है, आपका आर्टिकल 15, 16 और 17 जो इक्वालिटी को लेकर है, वहां पर जस्टिफाई हो जाता है. जबकि इकोनॉमिक जस्टिस है, वो कहां जस्टिफाई होता है? 39B, 39C and article 39D. What are these articles? Please
Please, you have to remember all the directive principle of state policy by heart, including their article numbers. I'm telling you, if you want to score good in your paper, there is no excuse कि मुझे याद नहीं होते हैं. There, you cannot say that. You have to remember it. Please spend time on it. And what is Article 39B? That ownership और जो है material resources की, that will be used for common purpose. ठीक है, अगर नहीं याद होते हैं कोई बात नहीं. When I teach you DPSP, Directive Principle of State Policy, मैं सब याद करवा दूंगा उसी दिन आपको. When it comes to 39C, there should be no concentration of wealth, right? No concentration of wealth, and this is equal pay for equal work, equal pay, right? And this was common good, all resources for common good. Okay, so this is how I'm giving you economic justice and how I'm giving you political justice. Through Article 19 you have freedom of speech and expression. इसके बारे में बहुत मजे आएंगे बात करते हुए. Article 19 के बारे में we'll have, you know, it is very interesting article because media nowhere talks about the restrictions on Article 19, only talks about the freedom of speech. Anyway, then Article 326, which gives you the right to vote also. Okay, so this overall is your justice. Okay, now what kind of liberty do you have in India? You have okay, let me just rub this over here. So liberty is in India, this is social, economic and political justice, and liberty is of thought, expression, belief, faith and worship. Thought, expression, belief, faith and worship. Very simple. Please remember the words: thought, expression, belief, faith and worship. Very simple, right? तो इन जो ये आपके सारे लिबर्टीज आपको मिल रही हैं, ये थॉट की लिबर्टी कहां मिल रही है? सोचने का अधिकार, टू राइट टू थिंक, कहां मिल रहा है? दिस इज आर्टिकल 19, राइट? थॉट, एक्सप्रेशन, दिस इज अगेन 19. देन बिलीफ, जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं जैसे वो 25 to 28, एंड फेथ एंड वर्शिप, दिस ऑल इज कवर्ड अंडर 25 to 28, इवन 29 to 30, वेयर यू कैन प्रमोट देम. एंड देन वी हैव इक्वालिटी. इक्वालिटी भी हम देना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर. कैसी इक्वालिटी देना चाह रहे हैं? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट? सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सारे लोग बराबर हैं, कोई बैकवर्ड नहीं रहेगा, और कोई बैकवर्ड रहेगा विल ब्रिंग देम फॉरवर्ड. नॉट व्हाट काइंड ऑफ बैकवर्डनेस? कॉन्स्टिट्यूशन से सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, बट इफ यू रीड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट इट ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट economic backwardness. We want everyone on the same pedestal to grow ahead together as one nation. So that is why we the people of India, having solemnly resolved to constitute India sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, कैसा? social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity. अब and ये तो सब तो हम कर ही रहे हैं, and अब और क्या हम करना चाह रहे हैं? and to promote them among them all fraternity, bhaichara, fraternity, bhaichara, I mean brotherhood. Now this word has been taken in our constitution from Universal Declaration of Human Rights. If you go and read the article 1 of Universal Declaration of Human Rights, what does it say? Okay, let me tell you what does it say. It says that all human beings are born free. First of all are free, born free and equal in dignity. बहुत मतलब इतना बुरा हुआ है शेड्यूल कास्ट के साथ. अभी आप थोड़ा हिस्ट्री देखें, या बहुत सारी और इवन बहुत सारे जो लोग किसी कास्ट में नहीं आते, दे आर ऑल्सो हैव बीन बैकवर्ड एंड दे हैव बीन ट्रीटेड सो अनइक्वली. रेसिज्म है इंडिया के अंदर. यू कम टू पंजाब, राइट? वो यहाँ पर कहते हैं जी, इफ यू कम फ्रॉम यूपी एंड बिहार, जैसे भैया आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय दिस भैया आ गया? यू नो it's really funny the way they are treated over there. Or they go to Maharashtra, see everyone is equal, they are only as human. By doing such things you are being foolish. This is pure kind of racism. ठीक है ना? तो ये ह्यूमन राइट है भाई हमारा. वी एग्जिस्ट, वी आर इक्वल. somebody is dark, right? somebody is of lighter skin, so what? You see, even this is kind of everything. All this is racism, and we Indians, I'm telling you, we have so much of racism. We need to correct this thing very soon. We are equals. And they are endowed. This article 1, this says that of Universal Declaration of Human Rights, it says article 1 है क्या? We are, and every human is endowed with reasoning and should act towards one another in the spirit of brotherhood.
सो हियर यू हैव फ्रेटर्निटी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। रीजनिंग हमारे अंदर, हर एक के अंदर इंसान में रीजनिंग होती है। यू गो एंड रीड अ बुक कॉल्ड गुलिवर ट्रेवल, इज इंग्लिश फिक्शन इफ यू लाइक रीडिंग। इस बुक की 4 बुक्स हैं इसके अंदर। इफ यू रीड द 4th बुक विच इज अबाउट द हॉयनम्स, that book tells you about the importance of reasoning in our life, though it's a work of fiction. Anyway, so I'll just come back to our topic that we were doing. So, and to promote among them all fraternity, उससे क्या होगा जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, हाँ, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? When all this happens, then we will assure few things. तो जब हम वो सारा कुछ कर लेंगे, वी विल एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल वुड बिकम इंपॉर्टेंट। एक चीज हम इससे ये इंश्योर करेंगे, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, किस चीज की? ऑफ द नेशन। सो दिस इज आवर प्रीएम्बल एक्चुअली। आई विल टॉक टू यू अबाउट दीज वर्ड्स नाउ। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का जो एक आत्मसम्मान है, उसका जो एक स्वाभिमान है, हर एक की डिग्निटी, इज्जत है, जो वो दैट थिंग विल बी प्रिजर्व्ड। व्हाट काइंड ऑफ डिग्निटी? वी ट्रीट सम ह्यूमन सो बैडली, यू नो, दे आर फोर्स्ड टू डू द काइंड ऑफ वर्क नो वन एल्स विल डू। हर एक को डिग्निटी चाहिए, आप चाहे कोई भी हो, आप यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वट एवर यू आर, एंड वट एवर रिलीजन यू हैव, और वट एवर बिलीव, फेथ, वट एवर you have, but each individual is important. You cannot say that I belong to, you know, Hinduism, that is why I'm a greater person, or I follow Sikhism, that is why I'm the greatest human being. No. You cannot say that. Everyone is equal. Each person has the same kind of dignity in India. Please understand that. After all, everyone is a human being, and this is what our constitution also says. And then it talks about unity and integrity of India. अब जब ये सारा कुछ कर लेंगे, जो मैंने आपको पहले पिछले पेज पर बताया यहाँ पे, this thing when we do all this thing, we, you know, what do? We by this we ensure the unity and integrity. What do you mean by unity and integrity of the nation over here? See, unity and integrity, this is territorial integrity. कुछ भी हो जाए, हम एक साथ रहेंगे। इंटीग्रिटी के 2 मतलब हो सकते हैं। एक नॉर्मल मतलब होता है दैट एवरीवन फॉलोज, दैट यू नो दैट यू आर नॉट ब्रीचेबल, यू आर वेरी ऑनेस्ट, दैट इज ऑल्सो इंटीग्रिटी। एंड in other words, you are undivided or a whole, एक इंडिया की इंटीग्रिटी। एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी? यूनिटी ऑफ द पीपल, ऑफ हम एक साथ हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, एथनिसिटी। अब नॉर्थ ईस्टर्न से उनके अगेंस्ट इतना रेसिज्म हमारे कंट्री में भर रखा है, जो पीपल, ऑल द पीपल फ्रॉम अगेंस्ट देम, राइट? फ्यू इयर्स बैक बैंगलोर में क्या हुआ था? एवरीवन नोज अबाउट इट। देयर वाज सो मच ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। वो उनको वहां से फोर्स किया जा रहा था, उठकर चले जाएं। दे वर बीइंग फोर्स्ड टू flee from Bangalore to back their homes. What was their fault? Aren't they the citizens of India? And haven't the people of Bangalore resolved under this very constitution that they will ensure the dignity of all individuals and thus preserve, help in unity and integrity of India? So this is how it is. So unity of people, of society, of family, of you know, every kind of communities, of religions, everyone will come united, और उससे देश की हमारी इंटीग्रिटी जो है वो बच जाएगी. That is how it will go. Okay, so now there is third part of the constitution, this preamble, which I'll talk to you now. This third part, it starts here. It starts like this, that in our constituent assembly, I won't write this, in our constituent assembly, this 26th डे ऑफ नवंबर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई जनवरी में आया था, क्या हो गया ये? हैवंट यू एवर थॉट अबाउट इट? तो यू नो दिस वाज द डे एक्चुअली व्हेन वी व्हाट डिड वी डू? We did three things. One was adopt, and second is enact, and third thing is give. क्या मतलब है इसका? 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. अडॉप्ट से क्या मतलब है? हम इसको एक्सेप्ट करते हैं इस दिन से. एनैक्ट का क्या मतलब है? टू गिव इट लीगल स्टेटस. एनैक्ट लीगल स्टेटस. एंड टू गिव, दैट मीन्स इट इज इम्पोज्ड अपॉन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. खुद को देते भी हैं, खुद पर इसको इम्पोज भी करते हैं. दैट इज अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव. एंड टू किसको दे रहे हैं? To ourselves.
to ourselves, right? तो खुद ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद ही वी आर गिविंग इट लीगल सैंक्शन ना, खुद ही हम खुद पे इसको गिव कर रहे हैं, यानी इंपोज कर रहे हैं टू आवरसेल्व्स व्हाट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ हियर इज द वर्ड जो मैंने बिल्कुल लेक्चर के शुरुआत में यूज किया था, this constitution. That means it has to be this particular constitution only, it cannot be any other constitution. It is written in the preamble that this constitution, that means just this particular constitution. Okay, acha, so abhi these are the basics about it. This is not the end of the lecture on preamble. Now I'll quickly talk to you about so many other things which are related to preamble. Okay, okay, let me just start it, let me just clear the screen. Okay, now now I have few questions for you over here. Is preamble a part of the Constitution of India? Now there is a very famous case called reference. This means reference. This means that the case was solved through a reference to the by the President of India to the Supreme Court, and Supreme Court gives its opinion whenever this is there. So this is known as the reference Berubari Union case. Now in this case it was held that preamble is not a part of constitution. Okay, ऐसे इसको याद रखना अभी, ठीक है. तो अभी व्हाट इज बेरूबरी, इसके बारे में आई जस्ट गिव यू क्विक रेफरेंस. दैट जो इंडिया पाकिस्तान वाज बाउंड्री, आई मीन उस टाइम पर जो ईस्ट पाकिस्तान था, इंडिया दैट बाउंड्री, राइट, देयर वाज अ रेड क्लिफ अवार्ड एंड रेड क्लिफ डिटरमाइंड दैट बाउंड्री, एंड वन ऑफ द सच डिस्प्यूट्स वर रिलेटेड टू बेरूबरी डिस्ट्रिक्ट, राइट. What happened that this man, Mr. Redcliffe, he forgot, he just missed it to write text about few districts, right. Now what he did, that there was a district called, there is still a district actually, this is called Jalpaiguri. Okay, now this district of Jalpaiguri, it was divided between India and Pakistan. This was halved. And you know how it was done that some thanas, some police stations were given to India, and some thanas jurisdiction that was given to Pakistan, that is West Bengal. Okay, now what happened that he omitted to mention, while dividing these thanas, right, he omitted to mention about one thana. He missed one thana, and that became the dispute later on, right. And because on basis of this one thana, Pakistan started saying that Berubari jo union hai, it belongs to Pakistan. Okay, now this Berubari union, Berubari ka jo area hai, now this dispute was resolved through a pact called Nehru-Noon agreement, or this was done in 1958. इसके अंदर क्या हुआ था that half of the Berubari union जो थी, it was to be given Pakistan, and half हमने रख ली. That is a common sense reasoning based thing कि ऐसी करना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो गई है. Now in addition that to this, 4 Kuch Bihar enclaves which were contiguous part of this, they would have also gone to Pakistan. उनके पास कुछ एरियाज उस तरफ का चला गया. अब क्वेश्चन उठ गया, इस दैट वाज द केस. अब किसी बंदे ने केस फाइल कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट गिव दिस एरिया टू पाकिस्तान. That was a dispute. Okay, the question is that कि जो this dispute regarding the power of the parliament to give the territory to Pakistan. In this case, reference the question. This is the case of Berubari, right? Now, with reference to this, the dispute arose whether preamble is a part of the constitution or not, whether preamble can be looked into or not. Okay. So when presidential reference was made to Supreme Court, it made a very detailed analysis of like Article 3, that is Union and Territory, जिसके बारे में आने वाले next lecture में बात करेंगे. So we'll talk about that in the next lecture. What does it say? That for the implementation, of course, for Nehru-Noon agreement, it was followed. Supreme Court was given this reference, and after Supreme Court said no, preamble is not a part of constitution, and after this an amendment was made to the constitution using the amending power under Article 368, and the result was the 9th Constitutional Amendment Act. That was the background. ठीक है, खैर. Now but in this Berubari reference case only, Supreme Court held that though it is not a mandatory, it is not a mandatory part, but is in fact a customary part of our constitution. Okay, this is a customary part of constitution. तो
इज इट जस्टिशिएबल? मेरा आपसे क्वेश्चन, आपको क्या लगता है अगर प्रियम्बल में कुछ लिखा और कोर्ट ना कर रही हो, कैन आई गो टू कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट दैट दिस इज रिटन इन प्रियम्बल एंड सो गिव इट टू मी? क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि ये प्रियम्बल में लिखे और ये मुझे दिया जाए, गवर्नमेंट दे नहीं रही है? नो, आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जस्ट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल इज जस्ट नॉन जस्टिशिएबल, राइट? दिस इज नॉन जस्टिशिएबल. It's not just because it cannot be enforced, right? This was said in the Berubari Union case. Okay, I'll just clear it now. Now, then came the landmark Keshwananda Bharati case. I've read the whole judgment. It's a beautiful judgment. Kabhi time mile, please go through the judgment. Keshwananda Bharati case. This was in 1973. Now, it said it is a part of the Constitution, right? देखो, जो बेरूबरी केस था उसके अंदर एक और बात कही गई थी, that though it is a key to the minds of the framers of the constitution, but it is not a part of the constitution. It is a part of the constitution, and hence because it is a part of the constitution, it can be amended, and on this basis 42nd amendment से 1976 के अंदर we added 4 words to the constitution. With addition of these words, the number of words in the constitution increased from 81 to 85 words हैं अब हमारे preamble के अंदर. Okay, but also it again said this is right, this is what it happened. Then later on in many cases, whether it was decided that constitution preamble is a part of the constitution. Okay, so एक कुछ साइड से concepts हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. There is a something called trinity of justice in India. The trinity हमारे constitution में वो क्या है? Justice, liberty and equality. Okay, so this is the trinity in our constitution. What is the significance of preamble then? You know, it categorically says that people are sovereign in India. It says we the people are sovereign before anything else. If you look at the order of the word, it's sovereign socialist secular democratic republics. First of all, we are sovereign, and it is written in capital letters, which to stress on it that we are sovereign. Okay, in preamble it is written in capital letters. So it contains the essence of the goal and the basic structure, and we can say it is rather the microcosm of the constitution. एक पूरे संविधान का एक gist है, निचोड़ है इसके अंदर. और जब भी कोई lack of clarity होती है, what do? We look into preamble ताकि कोई चीज में क्लैरिटी ना हो तो वो आ सके. ओके, सो व्हाई डिड वी चूज 26 जनवरी 1950? क्योंकि हमने क्या किया था, वी ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दैट विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे. दैट वाज इन 26 जनवरी. दैट वाज 1930 और 29. आई ऑलवेज कंफ्यूज दीज 2 years as one of these. Okay, anyway, so one of these 2 years it was decided that we'll celebrate this. From this day we are free, right? Indian National Congress declared it pre-independence time. So to preserve this date, because this date holds special importance, we chose 26 January 1950. All the constitution could have come into force in 1949 itself, and some of the provisions were implemented that day, and some of the provisions were implemented, all the rest of the provisions were implemented later on the 26 January 1950. Okay, so before I end the lecture, I just have few quick things to share with you. Now these are very factual things about the preamble. First of all, okay, do you know when was for the first time preamble was introduced in India? It was by the Government of India Act of 1919, which is also known as the Montagu Claims for Reforms, and there was a separate preamble. There was no preamble in the Government of India Act 1935. This had no preamble in it. These are few factual informations, random information which can be asked in paper. And then, you know, I'll talk about few people. For example, they are very good quotes. You can quote them in paper. Nani Palkiwala, he is a very famous legal luminary in India. Nani Palkiwala, he said that the preamble is the identity card of the constitution. Or you know, then K.M. Munshi was there. He said it is the political horoscope of the India. जो constitution के बारे में उन्होंने ये कुछ words ऐसे बोले यूज किए थे, ठीक है. And do you know, when I said that we are a democracy, we are sovereign socialist secular democratic, do you know which was the first democracy of the world? It was Vaishali. Please remember this historic fact. It just might be asked to you in your paper. Okay, so and finally, what was held in Keshwananda Bharati case? There can be a short note on it. Keshwananda Bharati case. In this case, it was held that
Number one, that the constitution preamble is a part of constitution, number one. Number two, preamble is not a source of limitations. Now you cannot say that something has not been mentioned in preamble, so that means it is a limitation on our constitution. कि अगर preamble के अंदर कुछ बात नहीं बोली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती. प्रियम्बल सिर्फ बढ़ाने के लिए, चीजें उसको कम करने के लिए यूज नहीं हो सकता. ठीक है, दो प्रियम्बल को स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं. एंड फाइनली एक केस है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है SR बम्बई. देखिए एक चीज समझ लीजिए, लॉ के अंदर, पॉलिटी के अंदर रट्टा बहुत होता है. देयर लॉट टू मेमोराइज व्हेनेवर यू स्टडी पॉलिटी और लॉ. ओके, अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, बट यू विल आल्सो हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद मी ऑन पॉलिटी. So in SR Bombay case, Supreme Court said that the preamble is part of the basic structure of the Constitution of India. Okay, so that is all about it. And now I'll tell you one very important thing, and that is, if you like this video, please go and share it with others. ठीक है, देखिए this really helps me, get to know that you are doing so good when you share the videos with others. That really encourages me. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के अपडेट्स, आप इफ यू वांट द वीडियो अपडेट्स इन योर मेल बॉक्स, आपकी ईमेल में आ जाए, देन यू कैन क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड व्हेन यू सब्सक्राइब टू अस, सीधा आपके मेल बॉक्स में चला जाएगा. एंड हियर इट इज, दिस ओवर हियर, दिस इज द सब्सक्राइब बटन. सो दैट इज ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.